Hello, I hope I am audible to you. Good afternoon to all. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. So today we will start. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. We will continue with the general anesthetics. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. We'll continue with the general anesthetics. General anesthetics सोबत आपण कंटिन्यू करूया आणि I will try to finish this general anesthetics today. जनरल अनेस्थेटिक्स आपण चालू केलेलं आहे. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you and you are able to see the screen. So we were started with the general anesthetics and we'll continue with the general anesthetics. So we have already seen the classification and all that, right? We have seen the classification of general anesthetics, right? So remember the classification again. I would like to revise the classification. I would like to revise the classification once more, right? So general anesthetics, they are classified into two major types. First class is nothing but the inhalational anesthetics. In that you have two subcategories. First one is the gaseous inhalational anesthetics. So in that nitrous oxide or laughing gas, then NOx, then xenon. Yeah, all these three are the gaseous in nature. That's why gaseous general anesthetics, right? Now liquid general liquid inhalational general anesthetics. So in that chloroform, trilene, cyclopropane, ether, halothane, enflurane, isoflurane, desflurane, sevoflurane, and methoxyflurane. These are the liquid inhalational anesthetics. Gaseous and liquid. Liquid are they are the liquid at room temperature. These are the gases which are used as a general anesthetics, right? Now for these drugs you need a special apparatus for inhalation, special apparatus for administration, right? Then intravenous anesthetics. So intravenous anesthetics, in that you have two categories. First one is inducing agent. So these are the rapid acting and short duration of action. So in that you have thiopentone, methoxytone, propofol, ketomidate, and ketamine. Ketamine it can be categorized into another class. Ketamine को आप अलग क्लास में भी डाल सकते हो, उसको बोलते हैं dissociative anesthetic, right? Now slower acting drug or long acting drug. So in that three categories, benzodiazepine. In this category you will have benzodiazepine ring, so diazepam, lorazepam, midazolam. Opioidal drugs is क्या है? Opioidal drugs means they are the narcotic analgesics. So in that you have fentanyl, ramifentyl, then sufentanil and alfentanil. Then neuroleptic drug or antipsychotic. Neuroleptic मतलब क्या है? Antipsychotic. So in that droperidol. So remember the combination of fentanyl plus droperidol. Combination of droperidol and fentanyl. ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया. न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया, राइट? न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया. तो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरोलेप्टिक ड्रग प्लस ओपोइडल एनाल्जेसिक ड्रग नोन एज अ न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना.
डिटेल में अपन देखेंगे, राइट, वी विल सी इन द डिटेल, डोंट वरी। एवरीबडी शुड ज्वाइन दिस सेशन, है ना, हर एक को लेक्चर ज्वाइन करना है। एवरीबडी ज्वाइन द लेक्चर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ फेंटेनिल एंड ड्रोपरेडॉल। सो फेंटेनिल क्या है? फेंटेनिल इज अ ओपाइडल एनाल्जेसिक एंड ड्रोपरेडॉल क्या है? इट इज अ न्यूरोलेप्टिक ड्रग। तो combination of these two drugs, it is known as a neurolept analgesia, right? Neurolept analgesia, right? We have also seen करून घ्या, मी काय करतो, निवांत बोला, मला आता थोडस मी लेक्चरच राडते, निवांत बोला आपण. Good evening to all, sorry, good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Hello everybody, join, we will resume. So we'll continue with that. Sorry for interruption. There was a issue of electricity. So we'll continue. There was a issue of electricity. We'll continue now. So we have seen the classification first. Right? So classification, in that we have seen the classification of general anesthetics. So there are two major classes. First one is inhalational drugs or inhalational general anesthetic agents. In the inhalational general anesthetic agent, there are two classes, gases and liquids. Gases, in that you have nitrous oxide, Entonox, xenon. Then in the liquids you have chloroform, you have trilene, cyclopropane, ether, halothane, N-fluorine, isoflurane, desflurane, sevoflurane, methoxyflurane. Then in the intravenous agent, they are used to maintain, okay, so they are intravenous agent. So in that inducing agent, they are used to induce the anesthesia. They are short acting and rapid acting. Inducing agent, in that you have thiobarbiturates like a thiopentone, methoxytone, propofol, etomidate and ketamine, right? Then slower acting drug, they are used for maintenance of anesthesia. They are used for the maintenance of general anesthesia. So in that, benzodiazepine like diazepam, lorazepam, midazolam. Opioidal analgesic drug और नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इसमें आता है फेंटेनिल, रेमिफेंटेल, सुफेंटेनिल एंड अल्फेंटेनिल, राइट? देन न्यूरोलिप्टिक एजेंट also known as an antipsychotic drug. So droperidol, this drug is related to haloperidol, है ना?
Now this combination of these two drugs, combination of fentanyl plus droperidol, combination of these two are known as neuroleptic analgesia, right? So we have seen this. Now again you can see the classification: inhalational drugs, inhalational anesthetics, gases and volatile liquids. In the volatile liquid, ether, halothane, isoflurane, desflurane, sevoflurane. Nitrous oxide is also known as a laughing gas. Then intravenous anesthetics, in that you have rapid acting or fast acting or induction agent. So these are the thiobutane sodium, methoxytone sodium, propofol and etomidate. Slower acting drug में आता है benzodiazepines like diazepam, lorazepam, midazolam. Out of that, midazolam is most commonly used as a general anesthetics. Then dissociative anesthesia is produced by ketamine. Ketamine is an opioidal analgesic which produces the dissociative anesthesia. Then okay, fentanyl is an opioidal analgesic. So this is a special apparatus used to introduce a general anesthetic agent known as inhalational anesthetics. Special apparatus used for the inhalational general anesthetics, right? Now we have seen this classification 2-3 times. Now I would like to explain you few words. पहला word है आपका anxiolytic. So I would like to explain you few words. First one is nothing but the anxiolytics or anti-anxiety agent. Anxiolytic means what? Anxiolytic मतलब क्या? Anxiolytic or anti-anxiety agent. These are the drug which decreases your anxiety of your mind or apprehension or tension. जो आपका एंजाइटी डिक्रीज करता है, टेंशन डिक्रीज करता है, एप्रीहेंशन डिक्रीज करता है, उसको बोलते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग, एंजियोलाइटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग. देन नेक्स्ट आता है आपका सेडेटिव. नेक्स्ट टर्म इज नथिंग बट द सेडेटिव ड्रग. व्हाट डू मीन बाय सेडेटिव? दीज आर द ड्रग व्हिच विल कॉज calmness of nerve, which will calm your nerve. They will depress your nerve and leads to calming effect. They will cause calming effect. Sedative drugs. Anxiolytic means this drug will decrease the anxiety, tension, apprehension. Sedative drug means this drug will decrease your drug will depress your nerve, will produce a calming effect. Then next term आता है hypnotic. Next term क्या है आपका? hypnotic. Hypnotic means what? These are the drug which will induce the sleep. These are the drug which will produce a sleep when taken. ये पूरा sleep बनाएंगे, आपको sleep induce करेंगे. Then after that है ना, anxiety and anti-anxiety drug, sedative, hypnotic. Then anesthesia, general anesthetic. General anesthesia. So anesthetic means what? These are the drug which will produce a reversible. They will produce a loss of all the modalities of pain sensation. General anesthetics are the drug which will produce a loss of pain sensation and all the modalities of pain, all the types of pain with the reversible loss of consciousness. So anesthetic is general anesthetic. They will decrease the all modalities of pain and they will cause reversible loss of consciousness, right? After that there is a so anticonvulsant. Anticonvulsant means these are the drug which will decrease your seizures, which will decrease your convulsion, which will decrease your epilepsy. So basically anticonvulsant drug, they reduces the neuronal firing. Next आता है muscle relaxant. They will cause relaxation of skeletal muscle. Now same drug may act as an anti-anxiety agent, same drug may act as a sedative, same drug may act as a hypnotic, same drug may be anesthetic, same drug may be anti-epileptic. So for example, there are two type of drug in the sedative hypnotics, barbiturates and benzodiazepines. एक बारबिचुरेट कैटेगरी के ड्रग होते हैं, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ड्रग होते हैं. ये दोनों ड्रग क्या है? बोथ these drug are sedative hypnotics. They will act on a CNS, they will depress your CNS, right? Both drugs, they can be either anxiolytics, sedative, hypnotic, anticonvulsant, muscle relaxant, anesthetic, right? देखो
in a smaller dose, benzodiazepine and barbiturates, they will act as anxiolytics. If you increase the dose, they will act as a sedative, okay, hypnotic, okay. If you increase the dose, they will act as an anticonvulsant. If you increase the dose, they will act as a muscle relaxant. If you increase the dose, they will act as a hypnotic. अगर further dose increase किया, anesthetic, and further dose increase, they will cause medullary depression. Patient will go in a coma and finally death. So same drug will act as a anxiolytic, same drug will act as a sedative, same drug will act as a anticonvulsant, muscle relaxant. If you increase the dose, same drug will act as a hypnotic. They will induce anesthesia. Later on, they will depress your medullary center and respiratory center, and lastly, coma and death. You know? But if you compare this barbiturates and benzodiazepine, so benzodiazepine has a flat dose response curve, and barbiturate has a steep dose response curve. So barbiturates, they are less safer. Benzodiazepines are more safe drug. They are having more safety. So anxiolytic matlab kya? These are the drug which will decrease your anxiety and apprehension or tension. Sedative drug means these are the drug which will calm your nerve. They will calm your nerve. Hypnotic drug means they will induce the sleep. Anesthetic drug means they will decrease all the pain sensation with the reversible loss of consciousness. Anti-epileptic drug means they will decrease your epilepsy, or they will decrease your seizure, or decrease your neuronal firing. Muscle relaxant means they will relax your skeletal muscle. We have already seen the classification, don't worry. So general anesthetics means what? These are the drugs which will decrease the all modalities of pain sensation with the reversible loss of consciousness. So we have seen the classification 2-3 times. So again you can see general anesthetics, inhalational general anesthetics, इसमें आता है volatile में volatile liquids, chloroform, diethyl ether, ethyl chloride, trichloroethylene, halothane, enflurane and isoflurane. Gaseous general anesthetics में आता है cyclopropane, nitrous oxide, nasal laughing gas, then chloroform, cyclopropane. Non-volatile general anesthetics, also known as intravenous anesthetics. क्वेश्चन आता है उसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स, से फॉर एग्जांपल थायोपेंटल सोडियम एंड मिथोहेक्सिटल. नॉन बार्बिट्यूरेट्स में आता है बेंजोडाइazepine लाइक मिडाजोलम, बेंजोडाइazepine में मिडाजोलम, डायजेपम, लोराजेपम. फेनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव इज अ केटामाइन. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. One of the following is a phencyclidine derivative, ketamine. Then steroidal general anesthetic, इसमें आता है pregnenolone. Steroidal general anesthetic, pregnenolone, right? Then others में आता है etomidate and propofol, right? Mechanism of drug action, of general anesthetics. How general anesthetics will act? Okay. What is the mechanism of action? General anesthetics, these are the drugs which are known as CNS depressant drug, which will depress your CNS, right? For the mechanism of action of general anesthetics, there is one observation known as a Mayer tone, and there was a overtone and Mayer observation. ये दो साइंटिस्ट थे, ओवरटोन एंड मेयर. They made a certain generalization, they made a certain observation that there is a close correlation between the potency of general anesthetic agent and their lipophilicity. So close relationship is between the potency of general anesthetic and lipophilicity. So Mayer and Overton observation, or Mayer and Overton theory. Mayer and Overton observation or theory. What they told that there is a close relationship between the potency of general anesthetic drug and their lipid solubility. यहाँ पे क्या है? Lipid solubility. So more will be the lipid soluble drug, more will be the potent drug. Okay. Now
Second thing, currently general anesthetic agent, they have different targets. So current evidence suggests that targets for general anesthetics, they are nothing but the receptor proteins of neuronal ion channel मतलब sodium channel blocker, like nicotinic receptor is one of the target, then serotonin is one of the target, GABA receptor GABA receptors are the one of the target for general anesthetics. Okay, glycine is there, glutamate is there. Okay, so general anesthetics, they will act as a agonist, they will act as an antagonist for the nicotinic receptor, they will act as an agonist antagonist for 5-HT, antagonist agonist for GABA receptor, glycine receptor, glutamate receptor. ठीक है, so these are the targets for general anesthetic drugs. Now very important for the for the inhalational general anesthetic drug, जो inhalational general anesthetic drugs है, तो उसमें देखो मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन मैक, मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन मैक, जिससे है ना आपका मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन अपने देखा है when we was discussing about the general pharmacology. At that time I told you what do you mean by minimum effective concentration, what do you mean by minimum effective concentration, what do you mean by minimum inhibitory concentration. Likewise, that for general anesthetics you have minimum alveolar concentration, minimum alveolar concentration. So it is the measure of potency of general anesthetic drug. तो जितना ज़्यादा है ना मिनिमम, जितना कम मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, रिमेंबर लेस विल बी द एमएसी, लेस विल बी द मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन. किसी ड्रग का मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन लेस है, दैट इज अ मोर पोटेंट ड्रग, मोर पोटेंसी. लेस विल बी द मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोर विल बी द पोटेंसी. ओके, सो हायर विल बी द मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, less will be the potency. Potency is there, more potency. If a drug is having less maximum alveolar concentration, or sorry, if an anesthetic is having less minimum alveolar concentration, that means it is a potent anesthetic. अगर किसी का मैक वैल्यू कम है, मैक वैल्यू मतलब क्या, मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन. अगर कोई ड्रग का मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो दैट मीन्स इट इज अ मोर पोटेंट ड्रग. अगर किसी ड्रग का मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ लेस पोटेंट ड्रग, राइट. सो रिमेंबर, है ना, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन आप बोलते हो नॉर्मल ड्रग के लिए, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा रिक्वायर्ड फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन. मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन आप बोलते हो एंटीबायोटिक्स के लिए, तो वैसे यहाँ पे मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है फॉर द गैसियस जनरल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स गिवन बाय इनहेलेशन रूट. ठीक है, तो दोज ड्रग विच आर गिवन बाय इनहेलेशन रूट, so to describe their potency, you have one term, minimum alveolar concentration. So it is the measure of potency of general anesthetics. Higher the MAC, less will be the potency. Higher the MAC, less will be the potency. मतलब कोई जनरल एनेस्थेटिक है, उसका मैक लो है, मतलब लोअर है ना, उसका मिनिमम alveolar concentration is low, so that means it is a more potent. अगर किसी जनरल एनेस्थेटिक का मैक वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या है, लेस पोटेंट है, लेस पोटेंट, राइट, है ना. सो वो हाउ लोकल एनेस्थेटिक और हाउ जनरल एनेस्थेटिक्स विल एक्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, यहाँ पे आपको समझना चाहिए. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स इन दैट मेयर एंड ओवरटोन ऑब्जर्वेशन. मेयर ओवरटोन ऑब्जर्वेशन क्या है, मोर विल बी द लिपिड सोलिबिलिटी, मोर विल बी द लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, मोर विल बी द पोटेंसी ऑफ ड्रग. इनका कहने का मतलब ये महाशय जो थे, है ना, मेयर एंड ओवरटोन, दे हैव ऑब्जर्व दैट मोर विल बी द लिपिड सोलिबिलिटी, मोर विल बी द potency of anesthetic.
Nowadays, anesthetic drug have different targets. They will act on a different ion channels. They will act on a different receptor like nicotinic receptor, serotonin receptor, GABA receptors, glycine receptor, glutamate receptor. So most of the intravenous anesthetics, they will act on this. Okay? Now very important, color coding for the cylinder, very important. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इवन फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन. तो फार्मासिस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट है ना. तो वी आर यूजिंग द गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट, so we are using the oxygen, we are using the nitrogen, we are using the carbon dioxide. So these gases, they are stored in the cylinder. ये जो gases होते हैं ये सिलेंडर में स्टोर होते हैं, they are still stored in cylinder. Even your general anesthetics are stored in the cylinder. नाइट्रस ऑक्साइड का एक सिलेंडर होता है ना, हीलियम का सिलेंडर होता है. तो देयर कलर कोडिंग, तो मतलब अगर साइक्लोप्रोपेन गैस है अगर सिलेंडर में, तो if cyclopropane gas is in a cylinder, if cyclopropane gas is there in a cylinder, तो cylinder color should be orange color. तो सिलेंडर का कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज कलर. अगर आपका सिंपली एयर है, सिंपली एयर है सिलेंडर, तो एयर सिलेंडर है, एयर सिलेंडर, तो इट हैज अ ग्रे बॉडी, एंड वाइट कलर एट द शोल्डर ऑफ सिलेंडर. तो जो सिलेंडर होता है आपका, है ना, सिलेंडर कौन से कलर का होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. इस साइक्लोप्रोपेन शुड हैव ऑरेंज कलर्ड सिलेंडर. अगर एयर है सिलेंडर में, so if air containing cylinder is there, so it should be painted gray in color. So paint on the cylinder should be gray, all body will be painted gray, and there should be white line on a shoulder of cylinder. If oxygen cylinder is there, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर is painted black, so cylinder body is painted black and white line should be on a shoulder. If कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर इज देयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है, इन दैट ग्रे कलर्ड बॉडी इज पेंटेड. ओके, हीलियम इज स्टोर्ड इन द ब्राउन कलर्ड सिलेंडर. हीलियम इज स्टोर्ड इन द ब्राउन कलर्ड सिलेंडर. देन एंटोनॉक्स क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंटोनॉक्स इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So in this color is a blue body with the white shoulder of cylinder. इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है ना. What is Entonox? It is a mixture of carbon dioxide and nitrous oxide. कलर कोडिंग क्या है, कलर कोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. इस साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर के सिलेंडर में स्टोर करना चाहिए. अगर एयर सिलेंडर है तो ग्रे बॉडी एंड व्हाइट शोल्डर रहेगा सिलेंडर का. ऑक्सीजन अगर है ऑक्सीजन तो ब्लैक बॉडी रहेगा, व्हाइट शोल्डर रहेगा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ग्रे कलर सिलेंडर रहेगा. हीलियम अगर है तो ब्राउन कलर सिलेंडर रहेगा. एंटोनॉक्स मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्लू बॉडी सिलेंडर का रहेगा एंड शोल्डर रहेगा व्हाइट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं. Next we'll see. Okay, very important, stages of surgical anesthesia. क्या है stages of surgical anesthesia? Stages of surgical anesthesia. So there was one scientist known as Goodell. In 1920. He referred Goodell in 1920 given the different stages of general anesthesia. So Goodell in 1920 described the different stages of general anesthesia by referring to a ether. तो उन्होंने क्या किया, ईथर लेके एनेस्थेसिया दे दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया. नाउअडेज स्टेजेस आर नॉट डिस्क्रिमिनेट, आजकल बैलेंस एनेस्थेसिया होता है. बट इनिशियली गुडेल वाज यूज द ईथर एंड डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया. तो जनरल एनेस्थेसिया के स्टेज होते हैं 4. Stage 1, Stage 2, Stage 3 and Stage 4.
Goodale in 1920, by referring to a anesthetic agent ether, described different stages of general anesthesia. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 को बोलते हैं अपन stage of analgesia. Stage 1 is known as the stage of analgesia. Now what is stage 1? Stage 1 is a stage of analgesia. Analgesia मतलब loss of pain. Now this stage 1 है ना occurs from the inhalation of general anesthetic up to the loss of consciousness. जैसे ही आपने जनरल एनेस्थेटिक इनहेल किया up to the loss of unconsciousness. This stage 1 extend from inhalation of general anesthetic up to the loss of consciousness. तो मतलब आपने ईथर ले लिया और जब तक आप कॉन्शियसनेस नहीं हो जाए आपका, जब आप अनकॉन्शियस हो जाए तब तक क्या है स्टेज 1. स्टेज 1 मीन्स इट इज नोन एज अ स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. यहाँ पे पेन सेंसेशन आपका लॉस हो जाएगा. स्टेज 1 known as a stage of analgesia. So it extends from inhalation of general anesthetic agent up to the loss of consciousness or unconsciousness. So what happens, there is a gradual depression of cortical center. जैसे anesthetic agent आप inhale करोगे, जैसे concentration आपके brain में जाएगा, तो there is a gradual depression of cortical center. Then you will get a sensation of hotness. You will feel suffocation, visual auditory aberration. मतलब आपका visual and auditory center depress हो जाएगा. Analgesia is the produced before loss of consciousness. Analgesia is produced before loss of consciousness. Now in the stage 1 में क्या कर सकते हो आप? In the stage 1, minor surgical procedure like incision of abscess. अगर कोई जख्म है उसको आपको क्लियर करना है, उसको आपको साफ करना है, तो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट इन द स्टेज 1. स्टेज 1 क्या होता है? लॉस है ना. स्टेज 1 इज अ लॉस ऑफ पेन, दैट इज अ स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया है ना, फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज अनकॉन्शियसनेस. So that's stage 1 is there. So in this there is a gradual depression of cortical centers, then sensation of hotness, feeling suffocation, visual and auditory aberrations. Analgesia is produced before the loss of consciousness. So in this minor surgical procedure like abscesses, dental extraction है ना, obstetrical maneuver, मतलब यहाँ पे है ना सिर्फ पेन लॉस होता है यहाँ पे. इट इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. तो इसमें क्या है कि माइनर टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हो आप. आपको अगर दांत निकलना है तो वो कर सकते हो, या फिर कोई है ना गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेटिकल मैन्यूवर है तो वो कर सकते हो है ना. मतलब बच्चा यहाँ पे है ना. तो दैट इज अ स्टेज ऑफ जनरल एनाल्जेसिया. स्टेज फर्स्ट नोन एज अ जनरल स्टेज 1 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया नोन एज एनर्जिया. सेकंड स्टेज होता है स्टेज ऑफ डेलिरियम. सेकंड स्टेज इज देयर नोन एज स्टेज ऑफ डेलिरियम. डेलिरियम मतलब क्या? डेलिरियम मतलब एक्साइटमेंट, शाउटिंग, इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग द सिक्रेशन. तो स्टेज 2 इज नोन स्टेज ऑफ डेलिरियम. तो व्हाट इज स्टेज 2? स्टेज 2 कहाँ से कहाँ तक होता है? Stage 2 extend from the loss of consciousness to the surgical anesthesia. ना स्टेज 2 कहाँ पे होता है? स्टेज 2 स्टेज 1 और स्टेज 3 के बीच में है. तो लॉस ऑफ इट विल एक्सटेंड फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू द सर्जिकल एनेस्थीसिया. दिस इज एसोसिएटेड विद द एक्साइटमेंट, शाउटिंग, इंक्रीज इन द मस्कुलर एक्टिविटी है ना, टैकियोपेनिया, हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ लोअर सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर. क्यों होता है? स्टेज सेकंड में क्या होता है? डेलिरियम. डेलिरियम मतलब शाउटिंग, इंक्रीज इन द मसल टोन, इंक्रीज इन द सिक्रेशन, ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड है ना. क्यों होता है स्टेज 2? स्टेज ऑफ डेलिरियम. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिलीज ऑफ लोअर सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर. रिलीज ऑफ लोअर सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर. So we'll struggle है ना, struggling
इंक्रीज द मसल टोन, वोमिटिंग में ऑकर इन द स्टेज। तो जैसे एनेस्थीसिया आपको दे दिया, जैसे ईथर आपको इनहेल कर लिया, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका पेन सेंसेशन लॉस होगा, दैट इज नोन एज स्टेज 1, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। उसके बाद में आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और बाद में थोड़ा सा शाउटिंग वगैरह करोगे आप, एक्साइटमेंट, शाउटिंग, है ना, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, नोन एज द स्टेज 2, स्टेज ऑफ डेलिरियम, राइट, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ लोअर सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर। और थर्ड स्टेज फॉर जनरल एनेस्थीसिया इज नोन एज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। स्टेज 3 इज नोन एज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, मतलब आपका ऑपरेशन जो है वो इस स्टेज में करना है। एनेस्थीसिया क्यों दे रहे हैं आप, बिकॉज यू वांट टू परफॉर्म ए सर्जिकल प्रोसीजर ऑन अ पेशेंट। तो जैसे एनेस्थेटिक एजेंट आपकी बॉडी में जाएगा, सबसे पहले एनेस्थीसिया होगा आपको, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, उसके बाद में डेलिरियम हो जाएगा, और बाद में और ज़्यादा कॉन्संट्रेशन एनेस्थेटिक एजेंट का अगर आता है बॉडी में, तो एज देयर इज इंक्रीज डोज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, व्हाट विल हैपन, स्टेज ऑफ surgical anesthesia. So what will happen in this stage? So this stage will extend from stage 2 to the stage 4. So what happens in the stage 3? Loss of reflexes of skeletal muscle. Loss of reflexes. यहाँ पे रिफ्लेक्स आपका जो है लॉस होगा। कौन से रिफ्लेक्स? जैसे आपका टच, पेन, है ना, आपका बाकी रिफ्लेक्सेस जैसे रिफ्लेक्सेस ऑफ कॉर्निया टू द लाइट, रिफ्लेक्सेस ऑफ कॉर्निया टू द टच। आपका आईलिड जो है, आईलिड के सामने अगर हाथ लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप आइज बंद करोगे। सच रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। मसल रिलैक्सेशन इज देयर, मसल आपका पूरा रिलैक्स हो जाएगा, देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ मसल। एंड दिस स्टेज 3 इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन। स्टेज 3 इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन। स्टेज 3 नोन एज अ सर्जिकल एनेस्थीसिया डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, है ना। Now in the surgical anesthesia stage 3, surgical procedure are carried out. Surgical मतलब जो सर्जरी होता है आपका वो ये स्टेज में होता है। Surgical procedure are carried out in the stage 3 plane 2. याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपको। Surgical procedures are carried out in the stage 3 plane 2. Stage 3 is divided into different plane. Plane 1, plane 2, plane 3, plane 4, है ना। तो पहला स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ एनालिसिया। दूसरा स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ डेलिरियम। तीसरा स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ना। सो सर्जिकल एनेस्थीसिया, तो एनेस्थेटिक एजेंट गुडेल इन 1920 बाय रेफरिंग टू ए एनेस्थेटिक एजेंट ईथर गिवन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। स्टेज 1 एनालिसिया, स्टेज 2 डेलिरियम, स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया। स्टेज 3 इज क्लासिफाइड इनटू 3 प्लेन। प्लेन 1 में क्या होता है, इन द प्लेन 1, तो इन दिस प्लेन 1 देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स है आपका, मतलब अगर आपने आँख में अगर आपका कोई धागा लेके जाओगे कॉर्निया में, तो क्या होता है, आप आँख बंद करते हो, देयर इज अ कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो इन द प्लेन 1 कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, है ना, बट कंजक्टिवल रिफ्लेक्स इज absent. कंजक्टिवल रिफ्लेक्स इज absent. प्लेन 2 में क्या होता है, रिफ्लेक्स फ्रॉम लैरिंक्स एंड लैरिंक्स इज आल्सो अपसेट। मतलब अगर आपने अपने उंगली डाल दी आपके मुंह में, तो आपको वोमिटिंग का रिफ्लेक्स होता है ना, दैट इज नोन एज अ लैरिंजियल रिफ्लेक्स। अगर आपने उंगली आपका डीप, है ना, आपके डीप थ्रोट के अंदर आप एक उंगली डालो या फिर कोई ये डालो, क्या स्टिक डालो, क्या होगा, आपको वोमिटिंग का रिफ्लेक्स आएगा। तो दैट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट इन द प्लेन सेकंड। जैसे एनेस्थेटिक एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, एज एनेस्थेटिक एजेंट इंक्रीजेस द डीप, है ना, जैसे डीप में ब्रेन में जाता है तो प्लेन सेकंड। प्लेन 3 में क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ प्यूपिल रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स आर लॉस्ट। तो अगर आपके आइज में किसी ने टॉर्च लगा दिया, तो आपका क्या है, टॉर्च लगा दिया, तो आपका आइज में जो पिपिल है वो साइज उसका कम होता है, तो मायोसिस होता है। तो लाइट रिफ्लेक्स, अगर आपके आइज के ऊपर टॉर्च मार दिया तो आपका आइज क्या होता है, आइज का साइज कम होता है, निकाल लिया तो बढ़ जाता है। तो डॉक्टर यूज टू चेक द रिफ्लेक्सेस। जब आप जाते हो हॉस्पिटल में, आपके घुटने के ऊपर मार देगा
तो घुटने के ऊपर मारने के बाद में नी रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। आपको चिमटी काट लेगा, है ना, आपको आईज में क्या देगा, लाइट देगा, क्यों, क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करता है। सो जैसे एनेस्थेटिक एजेंट आपने ले लिया, आपको एनेस्थेटिक एजेंट इनहेलेशन से दिया, इनिशियली क्या होगा, एनेस्थेटिक एजेंट आपके लंग्स में जाके एब्सॉर्ब होके ब्रेन में जाएगा, तो इट विल प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, आपको पेन नहीं आएगा। तो स्टेज 1 ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से गया अंदर, और तो स्टेज 2 डेलीरियम, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गया स्टेज 3 स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। तो सर्जिकल एनेस्थेसिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्स लॉस्ट। तो स्टेज 3 में क्या है कि रिफ्लेक्सेस लॉस है, कौन से, है ना, रिफ्लेक्सेस लॉस होंगे यहाँ पे, देन स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्जरी। तो प्लेन 1 में क्या है, प्लेन 1 में कंजक्टिवल रिफ्लेक्स है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। प्लेन 2 में क्या है, ये लॉस होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स लॉस, एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्स इज आल्सो लॉस। प्लेन 3 में क्या है, पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। देन प्लेन 4 क्या होता है, प्लेन 4 में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, प्लेन 4 इज नथिंग बट द पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायलेशन ऑफ पिपिल, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स। और स्टेज 4 में गए ना आप, स्टेज 4 में गए तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। स्टेज 4 इज नोन एज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। व्हाट हैपेंस इन दिस, सो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ऑकर्स, पैरालिसिस ऑफ intercostal muscle, more okay, paralysis of intercostal muscle and stopping of breathing ना। और ज़्यादा अगर एनेस्थेटिक एजेंट लिया तो क्या होगा, है ना, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन, मर जाओगे आप। तो दिस स्टेज नेवर कम्स बिकॉज ऑफ द बैलेंस एनेस्थेसिया इन टूडेज प्रैक्टिस। आजकल जो एनेस्थेटिक प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये स्टेज 4 आने ही नहीं देते, तो दे स्टेज 4 इज no more comes in today's anesthetic practice because of the balanced anesthesia. So remember surgical procedure, ऑपरेशन जो करते हैं आपका, ऑपरेशन जो करते हैं, जो सर्जरी जो करते हैं, किस स्टेज में करते हैं, क्वेश्चन आता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट इन द स्टेज 3 प्लेन 2 के अंदर ही करना है ना। प्लेन 3 प्लेन 4 आने नहीं देना है। अगर ये आया तो फिर आप कोमा में जा सकते हो, आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, आप मर सकते हो, डेथ हो सकता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट इन स्टेज 3 प्लेन 2, है ना, मैक्सिमम। तो देखो इनिशियली क्या है कि इनिशियली आपको एनेस्थेटिक एजेंट देंगे तो आपको पेन लॉस होगा, नोन एज एनाल्जेसिया, ठीक है। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एनेस्थेटिक एजेंट का बॉडी में तो आपको डेलीरियम हो जाएगा, शाउटिंग हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो और ज़्यादा डिप्रेशन होगा। देखो पहले क्या है कि एनेस्थेटिक एजेंट क्या करेगा कि आपके पेन सेंसेशन को डिप्रेस कर देगा, बाद में और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गया बॉडी में तो जो लोअर सेंटर से है ना, जो हायर सेंटर कंट्रोल करते हैं तो वो रिलीज होंगे। सो देयर इज अ रिलीज ऑफ लोअर सेंटर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर, सो दैट कॉजेज द एक्साइटमेंट, शाउटिंग एंड डेलीरियम। As more concentration of anesthetic agent goes, it will depress more CNS. तो स्टेज 3 स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, है ना, आपकी जो रिफ्लेक्सेस है वो सप्रेस हो जाएंगे। यहाँ पे प्लेन 1 में कॉर्नियल रिफ्लेक्स तो है, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स भी है, प्लेन 2 में लॉस होता है रिफ्लेक्स, प्लेन 2 रिफ्लेक्स फ्रॉम लैरिंक्स इज लॉस्ट, है ना, प्लेन 3 में पिपिल एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स आर लॉस्ट, प्लेन 4 में तो पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल। सर्जिकल प्रोसीजर is carried out in the stage 3 plane 2 के अबाउ ही सर्जिकल प्रोसीजर कैरी करना है ना। तो these are the different stage of general anesthesia. Now different anesthetic agent, तो पहले now different anesthetic agent, तो first is nothing but diethyl ether। तो डाइथाइल ईथर शॉर्ट में क्या है, इट इज अ क्यूरारे माइमेटिक, मतलब क्या, इट इज लाइक अ क्यूरारे अल्कोहल, इट इज अ क्यूरारे माइमेटिक, मतलब क्या, मसल रिलैक्सेशन करता है। तो डाइथाइल ईथर कैन कॉज मसल रिलैक्सेशन, सैटिस्फैक्टरी मसल रिलैक्सेशन। इट इज अ इन्फ्लेमेबल, ये जल सकता है, इन्फ्लेमेबल है,
explosive and also irritant. So it is irritant to your inhalation, it is irritant to your respiratory tract, causes the, अगर irritant है तो क्या करेगा, secretion बढ़ाएगा, it causes the respiratory secretion, coughing, है ना, that can be result, right? तो inflammable होता है, explosive होता है, irritant होता है, but curative mimetic है, it is a good anesthetic and good muscle relaxant, okay? But it has a cross tolerance to the ethyl alcohol. अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो इसका असर नहीं होगा. दैट्स वाई देखो आपको ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर क्या करता है, इंक्वायरी करता है. बिफोर ऑपरेशन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यूज टू इंक्वायर अबाउट द पेशेंट, वेदर पेशेंट इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वेदर पेशेंट इज टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, वेदर पेशेंट इज एडिक्टेड टू अल्कोहल. व्हाई ये क्यों करता है, पेशेंट के बारे में क्यों इंफॉर्मेशन लेता है? बिकॉज so he can decide the anesthetic agent and dose of anesthesia. सबसे खतरनाक काम होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का, है ना, वो एक सिर्फ 5 मिनट के लिए काम आता है ना. एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आता है, इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन देने के बाद में वो बैठता है, पूरा 3 घंटे बैठा है, रिलैक्स. क्यों? और वो एक इंजेक्शन देने का 7,000 रुपीज लेता है. तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जस्ट गिविंग वन इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, he used to charge around 5 to 7.5 thousand. Why? Because but whole life of patient is based upon the anesthesiologist, right? Because इधर उधर 1-2 मिलीग्राम भी एनेस्थेटिक एजेंट का, एनेस्थेसिया का डोज इधर उधर हो गया तो आपका विकेट गिर गया ना, आप पूरा राम नाम सत्य हो जाओगे. बिकॉज योर लाइफ इज इन ए हैंड ऑफ योर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट. तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के हाथ में ही आपका लाइफ है पूरा. क्यों? उसने अगर ज़्यादा इधर उधर कर दिया, है ना, तो आपका लाइफ खराब, आप मर जाओगे. सो डाइथाइल ईथर, so it has a cross tolerance with the ethyl alcohol and it may cause convulsions especially in the children. Next आता है halothane. Halothane is a fluorinated hydrocarbon. Halogenated hydrocarbon, halothane. So it increases the intracranial tension. ये intracranial pressure बढ़ाता है because of the vasodilation in the cerebrum. It is a microsomal hepatic enzyme inducer. Microsomal hepatic enzyme inducer होता है and it can cause hypotension, cardiac arrhythmia, which is a major drawback. It is a bronchodilator and hepatotoxic. जो halothane है, it is a hepatotoxic. And hepatotoxicity is because of the active metabolite. It is metabolized in the body and active metabolite will cause hepatotoxicity. Now what are the qualities of ideal anesthetic agent? तो आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सो इट शुड हैव अ रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, स्मूथ इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, इट शुड नॉट बी इरिटेंट. ये बहुत सारे उसके क्वालिटीज होते हैं, वो आप बुक में पढ़ सकते हो या फिर मैं बोल देता हूँ आपको. ए गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड हैव अ smooth induction of anesthesia and rapid recovery from anesthesia. It should not have adverse reactions, you know. It should not produce any hepatotoxicity. It should be readily available. The technique of administration should be easy, you know. ये सब ideal anesthetic agent की qualities होते हैं. Next one is a enfluorine isoflurane. Enfluorine, isoflurane, they can decrease the myocardial contraction force. They are myocardial suppressant. So most of the qualities of isoflurane, enfluorine, they are isoflurane is a respiratory depressant. Respiration को depress करता है. These are the non-inflammable. They are having good muscle relaxant property. And enfluorine, isoflurane, they can be considered as a ideal anesthetic agent. Because their properties, they are nearer to the ideal anesthetic agent, है ना, non-inflammable है ना, adequate anesthesia produce करते हैं, adequate anesthesia produce करते हैं, देखो यहाँ पे ethyl chloride है, it is only used locally. So what are the ideal qualities of general anesthetic agent? General anesthetic agent क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो, general anesthetic agent should induce the anesthesia smoothly, है ना. यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ,
स्मूथ इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया, स्मूथ इंडक्शन एक क्वालिटी होगा। सेकंड क्वालिटी क्या है? रैपिड रिकवरी। A general anesthetic agent should have following properties. First property is it should have smooth induction of anesthesia and rapid recovery, है ना। डिवाइड ऑफ it should be non irritant, ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन इरिटेंट, राइट, नॉन इरिटेंट। It should not cause delirium, it should not cause delirium, और एक आइडियल क्वालिटी, it should not cause delirium. So it should be induce anesthesia, है ना, smooth induction, rapid recovery, then non-irritant, then non-delirium, should not cause delirium, then it should produce adequate analgesia, it should produce adequate analgesia, it should relieve your pain, it should produce adequate analgesia, it should produce adequate muscle relaxation, muscle relaxation, it should produce adequate muscle relaxation. Induction and recovery should be smooth, it should be devoid of adverse effect, and not a complicated apparatus is required. Complicated apparatus उसको लगना नहीं चाहिए. These are the qualities of ideal anesthetic, and it should not be inflammable. It should not be inflammable. Inflammable नहीं होना चाहिए. So these are the ideal qualities of general anesthetic agent, and most of the ideal qualities are satisfied by these N-fluorine, isoflurane. Right? That's why isoflurane, N-fluorine can be called as the ideal anesthetic agent. Okay? Next is nothing but the trichloroethylene. So next there is a trichloroethylene. It is a potent analgesic and muscular relaxant. Okay. Muscular relaxation is inadequate. It has been used as a self-medication analgesic during labor. जब डिलीवरी होता है उस टाइम पे ये सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं. देन गैसेस एनेस्थेटिक में पहला है आपका नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस. is also known as a laughing gas. Why it is known as a laughing gas? Because when nitric oxide is given, nitric oxide जब देते हैं, it will produce a delirium. It will produce a delirium. It will produce a delirium. It will produce a excitement. It will produce a euphoria, false feeling of well-being. So that's why ये क्या है? It is known as a laughing gas. Nitric oxide is known as a laughing gas because it produces the excitement, it produces the feeling of happiness. Laughing gas. एक मूवी है देखो, है ना, एक मूवी है अक्षय कुमार की मूवी है देखो, है ना, अक्षय कुमार की मूवी है. उसमें क्या है, ये दीपिका पादुकोण है, अर्जुन रामपाल है. उसमें वहाँ पे एक जन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देता है, सभी हंसते हैं. तो नाउ कॉमनली यूज्ड टुगेदर विद ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में देते हैं GOE टेक्निक. मतलब क्या, गैस ऑक्सीजन एंड एनेस्थेटिक. Mixture of 80 to 20, 80-20 mixture of nitric oxide and oxygen can be used for the anesthesia. Excitement can be violent, can cause spontaneous abortion. So it has a minimum alveolar concentration, so it is the least potent drug. कौन सा है? Nitrous oxide. Methoxyflurane is the most potent. तो चलो जान दो, मुझे लाइव में कुछ बच्चे नहीं आ रहे तो भी एंड कर देते हैं इसको, देखते हैं बाद में. चलो